Yeah, Mantesh, you can start. Mantesh? Yeah, tell me. Okay, cool. Yeah, okay. So, okay, once again, hello everyone. And just a quick on what's happening in the market. If you see, these are some of the, core uh, indices. Nifty, IT, Pharma, FMCG, Auto, Bank Nifty, and Energy. So if you see in current situation from say example beginning of this year, if we take how it is going on, so all the indices are just nose diving. There is none of the index we can say performing in this market. Energy was performing, but this green line, if you see, this is the energy indices when all the sectors were falling. So energy is the only one indices was going up. And but if you see from last month, that index also started falling. So that is the result of all those stocks like MRPL, China Petro, and all those refinery stocks which given a huge returns in this falling market. So you might have seen that all those stocks also started falling and coming down now, because this energy index is also now falling down. So at this moment, I really don't see anything concrete where when the reversal or when the bottom is going to happen. But looking at the current Nifty chart, things are not really in a good shape. Seems Nifty might go further down, but definitely one thing is looks like is it will not fall that big way as now, which has already been like from 18,000 plus to now we are almost 15,200, 15,300. So from here, maybe another few points, few hundred points, I would say, it might just go down. If I will just put it Nifty. This is the Nifty chart. This was around 1500, 700, 1500, 800 was a very strong support for Nifty, because this was a zone where Nifty has consolidated a good time and then took the rally. And if you see here, it took a support, here it took a support, and then last week with a huge big red candle, it broke that support and came down. So now it should somewhere come in this range. This range is around 14,800 to 14,800 to 14,900 range. So another 400-500 or 300-400 points, it should just come down and then consolidate, and then from there it should take a rally up. That's what looks like looking at the current structure of the Nifty. So let's hope for the best. It should not go ideally. We as a trader feel that Nifty should reverse next week and then start moving up. If it happens, well and very good. But if it goes down, then I think this is the range where it will little bit come down, consolidate, and then it will go up. So this is my view on the Nifty, and that's what I feel. Next, coming to junior KG indicator. Yesterday, you might have seen that I have given you a V7 version 7 indicator.
So there was a bug. Actually, the bug was when the stock is below 200 EMA and when the stock starts moving up, and when all the criterias are meeting and the stock crosses about 200 EMA, in some cases I have seen that the indicator line was not crossing above 200 EMA. So one example I'll share with you. CAMS chart. So if you see here, if I just put 200. Yeah, this black line is 200 EMA. So if you see here, here we got the buy signal from PSR. So this is the green dot came, and then the stock started moving up. And then on this day, on 9th of June, the stock crossed 200 EMA, but our in previous version 6, if you see, this indicator didn't cross this zero line. It was below zero line only. That was the bug. So it has worked now, but if you see now in this new version, it is crossed here on this day. And then when it came down below 200 EMA, then again the stock came down and gave a sell signal. So that has been fixed. That is one thing. Second, in settings, if you see here, there are multiple different colors. So these colors I have put it based on my interpretation. If somebody want to change those colors, you can go and do it. Like example, when the stock is going up, I have put it as green color line. So you can change whatever the color you want it. These are the 4 colors which you can change based on your interpretation if you want to change it. Okay, this can be changed and that same will be reflected on this indicator. Second, one more thing very important on the junior KG settings is basically this exit EMA. So as per our strategy currently, as we are mainly using this strategy for the swing and momentum play. So I have kept 13 EMA as the exit signal to trigger. But if somebody want to change that one to some different EMA, you can go ahead and change that one to different EMA. So like example, if somebody want to play with 21 EMA, they can just go and change it. So if you see here, the indicator line changes, you know, the entire structure of the indicator line has changed. So that way you can change this setting. You can change this EMA crossover settings and PSR values also. If somebody want to do that a trial and error with some different settings, they can always do that one. But make sure that whenever you change the setting of PSR value in junior KG indicator, the same values should be here also. Okay, so you need to keep the PSR indicator value plus the settings what you want to keep in the junior KG. So both the settings has to be same. Similar on the EMAs also. If you are changing the EMA values from 8 to 18, if somebody want to 13 to 26, if you are changing that EMA value here in junior KG, then change the same EMA value here also. Then only then you will see both the indicator and the chart is sync with each other. If both the settings are different, then here on indicator you will see a sell signal or a buy signal, but on the chart you will not see that one because the settings are different. So that way, if somebody want to play differently, then you can change it. And secondly, if you want to play this indicator for the weekly, like example on a daily, if you want to keep it exit EMA as 13, and for something like long term, long term or a core portfolio, what do you call it as, there if you want to change this exit strategy to 21 EMA on a weekly chart, so you just change this one 13 to 21, and then you can do your buying or selling based on the weekly chart. So accordingly, then your exit and entry triggers will change automatically. Yeah, so that's how you can do the changes in the junior KG setting, and you can use that one.
Yeah, and just a quick one. Somebody was asking what are the interpretations. See, basically, when okay, if I take this example, CAM example only. So this blue dot, green dot. When this green dot pops up, that means the PSR, parabolic SAR, has given a buy signal. If you see here, parabolic SAR has given a buy signal. But here in this case, we will not take the buy because the stock is below 200 EMA. Okay, so I will share one good example which will be very clear. Yeah, see, this is the perfect example which I want to share. See, on 24th of May, the stock crossed above zero line and this green line popped up. So the actually on the same day, the 8 EMA to 18 EMA crossover also happened, and the parabolic SAR also has given a buy signal. So that's the reason the stock was below this zero line. If you see this, the stock is in a sell zone. 8 EMA crossed downwards, so it was in a sell zone. So when the stock came up on the same day, 8 EMA to 18 EMA crossover also happened, and the parabolic SAR also has given a buy signal. So this was the perfect entry as per the junior KG strategy at 1960, and then the stock is just going up and up. Here the red dot popped up. So red dot popped up means here basically the parabolic SAR has given a sell signal. But that day, if you see, because anyways we are taking the sell call or a sell decision at the end of the day, around 3 o'clock. So if you would have seen that, okay, even though the parabolic SAR has given you the sell signal, but there was a big buying day on that day. So you could have just waited, you would have not exited. But if this candle, instead of green, if this would have been a red candle, then definitely you would have gone ahead and booked a partial profit in this day. And based on the next movement of the indicator, if the indicator is falling down, then you would have exited. But if you see next day itself, again there was a bullish candle, so immediately parabolic SAR has given you a buy signal. So it acts so fast, you will not lose anything. If one day before it has given a sell signal, but immediately next day when it sees there is a momentum, and if there is a rally, it will tell you to buy next day itself. So that way you are in the trade. So this is the interpretation of the indicator. And this blue in between, if you are seeing this blue, so this is basically when the stock is in the uptrend, and whenever there is a red candle is formed, that day that blue line is the color of the line is changed to blue. So if the stock is just going up and up, if you see from here, every day, almost 4 or 5 days, the stock is making green candles. So if you see that the line is in green, on this day the stock made a red candle here this day, so the color changed to blue. So that way you want to change those colors for your individual interpretation, you can do the changes in that one. Okay, I hope guys it's pretty clear. I explained how it is interpreted. Okay, what is this? What is base EMA? What is base EMA? Where is the base EMA? Base EMA. Okay, see, base EMA is basically, that is our basic framework EMA. Like as per junior KG strategy, I am using 8 EMA and 18 EMA. So that's a base we have kept it as a general, and but if you want to change that one to, instead of 8, if you want to change it to 13, and instead of 18 you want to change it to 21 or 26, you can change it. So for you, then it will be whatever the changing number you put it, that will be your base EMA.
That's what is a strategy. So, but 8 to 18 EMA, I have did lot of back testing, and after that, we as a general we have decided, okay, we will keep this as our base EMA numbers. If somebody want to test some different numbers, you can do that one. Okay. See, basically for the PSR value for the daily, you can keep the same value 0.03, 0.03 and 0.2. Okay. But if when you are playing on a weekly chart, so that means you are playing positional, okay, or for the long term. So that time you can change it to 0.04, 0.04 and 0.2. That should be your weekly basis changes instead of 0.3, 0.03, 0.03, 0.04, 0.04. In the junior KG also you need to make those change, and in the PSR value here up also you can make the change. Okay, green dot below zero line. Yes, you will not take the entry, but it will give you an idea that parabolic SAR has given you the buy signal. So whenever the parabolic SAR gives you a buy signal, so that means that stock should come into your radar or into your watch list, because that stock is now ready to move up. So you can just put that stock on in your watch list and watch it on a daily basis. As the day the line crosses from below zero line to above zero line and turns from red to green, you can just go ahead and take a position. What sound is fine. Okay, Amit. Yes, Mantesh. Okay, so that's what I just wanted to explain. So I have done that one. So now if we want to take some questions, we will just straightway go with the questions. Okay, I think everyone can. I mean, whoever wants to ask a question can unmute themselves. I don't see, why we should not be able to unmute. Yeah, yeah. So Mantesh, yeah, I would just start. So I mean, we understand how this market is going right now. We don't know how much it will go down and things like that, and there are different factors going on around. What would be your take in terms of entering into a trade now, given that I mean, the lookout is still bearish? So will you think, okay, it's still okay to go into a trade if junior KG gives a buy signal, or we should rather wait and let things stabilize a bit in a week or two or whatever? okay, it's very important, Amit. Actually, in fact, I wanted to touch this particular point, but somehow I missed. Yeah. See, junior KG strategy, as I am telling repeatedly, junior KG strategy is a momentum strategy, and when the momentum is there, then we play a swing in that one. So we enter in the lower swing, play the complete swing, and when the sell signal comes, we exit. So basically this entire strategy is designed based on the momentum. So, but right now that momentum can be upwards or that momentum can be downwards. Okay. So, but as a retail traders, 99% of the time, we play the momentum only on the uptrend when the stock is going from downward to uptrend. Okay. But there may be some people who might be playing a downward momentum also by shorting the stock. When the stock is falling, they will short the stock at the higher level, and they will buy the stock when the stock reaches to the bottom. That's how they will make a money, by shorting the stock. So this same strategy, if you reverse exact 360 degree, if you reverse it, then it can be used as a shorting strategy. But we don't do that one. We use this momentum strategy only for the long. So my take on this particular current situation is, try, first of all, the first thing is, try not to take any position. Just stay out at this moment, at least at this moment, because the
volatility in the market is so high, you don't know what's going to happen. Say, like example, one day the stock will be so bullish, so many stocks will give you a buy signal and you will just go and buy it. But next day you will see that the huge market fall. And this instant I have seen many a times in this last 1 month. We buy a stock, and then next day all those stocks will be like 5%, 6%, 7%. All those stocks will be falling. No doubt, now the bottom is coming nearer. That's what we can predict. We can expect, but we don't know how much that will be, or how much the volatility, how intense volatility it will be. The market will go down. But my take on this one right now, what I am following as a personally, I'm not buying any new positions, even though if any new buy signal triggers also, I'm not buying it. Let it be the way it is. Other than that, if you still feel that you get tempted, yeah, no, setup is very good, risk is very minimum, then just go and buy a small quantity, just to keep yourself, your trader alive in yourself. Just buy a little quantity, but don't buy anything aggressively. Don't take big positions. Just try to play small and do it. Or if you can avoid it, that would be the best. So if you see, last position which I posted was that Rama Tubes and BLS. So BLS was before that. So Rama Tubes. So luckily that Rama Tubes is, after taking position, even though the market is falling so crazy, that stock is holding every day. Every day 3-4% that stock is holding and going up. So that is the only stock which I have purchased last week. After that, there were a couple of other entries also, but I didn't took a position. Or even you might have seen that I have not posted any chart also, because what happens if I go and post the chart, then maybe one person also go ahead and take a position, so that is not good. So that's the reason I'm not posting charts also, even though if there is any stock is giving a buy signal. That's what is my take. Because once the market will rebounds and reverse, there will be a clear indications that suddenly you will see that the sentiments in the markets are changing. It will be very clearly visible when the market will form bottom and it will form reversal. It will be very clearly visible. But right now, when it will be bottom and how much it will go down, there is no clear visibility on that one. Fair, Amit? Yeah, Mantesh, I think that makes sense. What I think you would have already checked. I'm sure about it. Natural gas prices, everything has come down a bit. Crude is down a bit. So things might get, stabilized for short-term period. Not for long. You are right. It's not really the bottom still, but maybe for this week it might be the case that there would be some up move. But I don't think it's going to sustain. Yeah, you are right. You're right, Mantesh. Yeah. So next week also, if you see Monday, there is a good moment, and Tuesday also, if you see good movement, then you can small positions, you can just take positions 2-3 days, and if some good profit, try to book it like that. You can play with it, but don't go aggressive at this moment till the time we see clearly there is some changes, some market structure changes are coming up. Right. Praveen, how to screen the stocks? If you see our last week's meeting, in that I have clearly, almost like 30 minutes, I have explained from a zero, from downloading the screener to how we can, study the stock. All these things I have very clearly explained in our last Sunday's meeting. So just have a look on last Sunday's video, which is on my YouTube channel.
you will understand. And other than that, if you have any other questions, you can always let me know, Praveen. Any other questions, guys? Anything? Yeah. Mante, sorry, one more point from my side. Are you Yeah. also thinking from another way? So one is trading, which obviously you are checking in terms of buy and sell signal and all those kind of stuff, volatility, etc. But from a core portfolio point of view, obviously there are stocks which are really good, no doubt about that. We, all of us can do some study and understand, okay, these are the stocks which are good and have actually dropped down uh, 20, 30, 40% from their levels and have good valuations. Are you thinking that, okay, you might just want to start adding some from this time onwards, ignoring a bit on the technical side from a core setup point of view only, not for trading, but from a long-term core setup point of view? Yes, definitely yes. I have already thought about the stocks which I will start accumulating. But at least, what I am thinking, some site we should see, okay, there is something is changing now. uh, say like example, I'll tell you. Last week, this three big leaders of Europe, they went to settle down this Russia Ukraine um, war. So looking overall, from a global perspective, even because I have a lot of my friends in Europe and all those countries, so I was talking to them yesterday, just to understand and take a feel, how or what those people are feeling who are in Europe right now, because they are the people who are majorly getting impacted with this war. Even though the Ukraine and Russia is actually fighting, but Europe is nothing to do with that, okay. They are not directly involved in the war, or they are not directly doing anything. But if you see the indirect impact, financially, inflation and all those things is hitting them in a big way. So they were telling, in last 2-3 months, the entire grocery or food products or all the products, almost 25 to 30% increase in all the prices of those items, because of this crude oil and gas and all those things. So that way it is a getting big impact on all those things. So somewhere I feel Europe has now understood, we are nothing to do with this war. They both are fighting, but unnecessarily we are getting impacted with this one. So okay, maybe indirectly at the beginning they were thinking, to this war will be for 1-2 weeks or 3 weeks, and then it will finish it off. There will be some resolution, but it didn't happen. They actually miscalculated that one. It's now more than 3 months. Still the war is going on, and Russia is not stopping anyway. So that's the reason this three leaders, I think Germany, France, and one more country, I don't remember, they went and to settle down this one. So I think they are in a mood now to tell Ukraine, boss, nothing is going to happen now. Russia is not going to stop. It's better you pull out and surrender and stop the war. And I think that is the only way left out now to stop this war. Because if what European countries, that EU, basically what you call it as EU, and US, what's their take was, when they started the war, that Russia's economy will completely collapse because of the sanctions and because of all those things. Russia's economy will completely collapse. That didn't happen actually. If you see, starting I think 2-3 days, only Russia's currency, which is ruble, I think, fall down big way. But after that it started going up, and their economy is pretty strong and stable. After that 2-3 days fluctuation, after that it got stabilized, and now it is going up and up, even though everyone in the world is getting affected. But if you see Russia's, they are getting stronger.
So that way, everyone understood that, the purpose with what they did didn't really serve the purpose. So now only thing is somehow uh, convince Putin and end this war. So if that something comes up next week or maybe after 1 week, then there may be definitely there will be a sentimental changes in the market and things you will see it. So I'm just waiting for something to see from somewhere, now the market sentiments are changing and the market is reversing signs. So then probably we can start accumulating small quantities, because see, the market has already fallen, I think almost all the good fundamental stocks, if you see, almost like 35% to 40% are fallen in that range. Or maybe some stocks, some this good fundamental IT stocks, all are maybe like 45%, more than 45% are fallen, so when that reversal happens, and if you are losing that 5-6% or a 10% of movement, still that's fine, it will not hurt you, and then you can start accumulating trench by trench. So that's what is my take. And I'm just waiting for that some reversal sign to come in terms of news or somewhere, and then I can start accumulating. So few of the stocks which definitely I want to accumulate in my portfolio, which I don't have right now, is one of that is Bajaj Finance. Definitely, it's a good corrected now. So for long term, for core portfolio, definitely I am going to start accumulating that one. Then other than that, good consumable durable items like Polycab could be one of the good stock to accumulate at these levels. So there are few of the stocks which I don't have currently in my portfolio. Definitely I am going to buy it. In large cap IT, Infosys, yes, that's one of in my mind which I want to buy. Infosys, definitely I want to include in my portfolio at this moment. That one stock I will be adding up. So definitely when this sign comes, and I know that a lot of people now are just eagerly waiting to accumulate the stock for the core portfolios. So I think we will start that conversation, which stocks to start accumulating, so we can do that one. Or else definitely if somebody want to, as I said, we don't see the downward movement a big way right now. Maybe if it is happening also, there may be few 100 points. Somebody want to start, I think it's not a bad idea. They can start they very small quantities. If they want to start, I would say they can start. It's not harm in that one. It's only that after that, even that after buying, if the stock goes down also, it should not go more than 10% down, I would say. And from there, then the stock will reverse it. So that's what I feel. Yeah, agreed, Mantesh, agreed. In fact, it will not be surprising to see, in coming times, Russia becoming more of a powerful country compared to US, given the way things are working. So yeah, agree to your points. Yeah. So basically, Sunil, I can see his Naukri, Bajaj Fin, Infosys, TCS, Jubilant Food. Yes, these are the definitely Jubilant Food. Actually, I already have in my portfolio. Bajaj I don't have, Infosys I don't have, Naukri I already have. In banking stocks, I feel two stocks you can bet on. In fact, three I would say. From three you can choose any two. One is Kotak, then ICICI, and HDFC. So from this three, you can no need to go for all the three. You can go with two, either HDFC and ICICI, or Kotak or ICICI. So like that you can play with two stocks. And in pharma, I feel Davies Lab. That is one stock which has corrected big way.
So definitely that one stock, if somebody want to play a diversified portfolio, and if you want to choose some stock from pharma sector, then Davis Lab definitely, yes, you need to have in your portfolio. The one thing is that the stock has corrected big way, and when the market rebound will happen, you will see these are the stocks which will start moving up first, because these are very, very strong fundamental stocks. Whenever there will be a market rebound, these are the stocks first which will start the race, and rest of the stocks will follow them. So in pharma, I feel Divi's Lab is one of the good name to play with. And in specialty chemicals, Deepak Nitrate, yes, that's one definitely I feel you should have in your portfolio. Deepak Nitrite is one I feel. Then 1 minute, let me see, because I have. So specialty chemicals, yeah. Deepak Nitrite is one stock, yes, for me. And from this Balaji and Alkyl, I think one should be okay. Instead of taking both, one should be okay from this. And then Vinati can be also a good option to play with, play for a long term thing. If you are talking about a fertilizer and that sector, so definitely GNFC is one of the very, very strong stock, considering their recent fundamental numbers. GNFC, I think, pretty strong stock. You should be. Gujarat Fluorochem, yes, definitely yes. I would say, yeah, that's there already in my portfolio right now. If you want to play the reality sector, you want to keep one stock from reality sector. Loda, I like pretty much, very strong stock. So Loda is there, and then Godrej Properties. This also has corrected a big way, but very strong stock, Godrej Properties. You can consider. What it is with Vinati, I understand here some management issues are coming. They have also reduced their stakes. Okay, a good valid point, Manish. Definitely, we need to look into these kind of things. We are just taking a name based on previous track record, but definitely when we will actually buy it, I think this is as Manish mentioned, there is some management issues, so we need to really look into it when we will be actually buying these stocks. So in this, from this consumer durable, I think Polycab I have already mentioned. Astral can be one very strong stock which you can start including. I know if you don't have, you can keep it in your portfolio. Then Asian Paints. Asian Paints, again, it's a very, very strong stock. Corrected a big way. Pidilite, Titan. See, these are the few names I would say. Asian Paints. If I go again, Polycab, Astral, Asian Paints, Pidilite, and Titan. From this, I would say 5 names. So you can choose, 2 or 3 from that. Pharma, I said I like Divi's Lab, one pretty strong stock, I feel. Other than that, in FMCG, DMart, if you see, it has corrected a big way. So whenever there will be a market rebound, I think DMart will be the first one which will start the rally. So DMart, yes. Tata Consumer, another one I like pretty much. So these two can be considered from because this Tata Consumer, that there are a lot of mergers are planned ahead. So Tata Consumer, once those mergers happens, I think Tata Consumer can be one of the good big FMCG companies. So Tata Consumer and DMart can be 2 names in your portfolio. Metals, I really don't want to keep a single name.
in my core portfolio. If if there is any rally comes, I will play as a satellite and I'll book a profit, but I don't want to buy anything for core portfolio in metals because it's very, very volatile and cyclical. So I'll be just away from this one. In terms of auto, Balkrishna is already into my portfolio, very small quantity, but definitely I will start accumulating when the market rebounds. So Balkrishna, one of the good name you can include in your portfolio from auto. Maruti can be one of the strong play because you know, Maruti is like, you know, Indian auto market dominated company. So for a long term, if I am thinking any stock for from auto, so Maruti can be definitely yes. And Balkrishna, I can say one another one, and then M&M. Why M&M? M&M is basically they are into all the segments, you know, small cars to trucks to tractor, all the segments they are available, they are into. So that's the reason M&M I think can be a very, very strong play here. So in from auto, I think M&M, Balkrishna. With the Balkrishna, you are playing a auto ancillary play, and M&M and Maruti can be a, you know, sector play. So these three stocks I feel pretty strong in that one. Sugars, definitely I don't want to put anything in my core portfolio. Banking we have already discussed, SDFC, ICICI and Kotak. Coming to IT, here is a big list actually. So from that one stock, KPIT, I can tell you 100% definitely yes. The major the reason for that one is KPIT is into multi-segment business. So one of their major which will impact or give a good move will be the EV sector which they are into. So that's the reason KPIT yes, definitely. Tata Elxsi can be one of the long-term bet. And from LTTS, Mindtree, Persistent and Coforge, from the four names, I think two should be enough from the that side. And large cap TCS, Infosys, I would say Infosys can be a good bet in terms of growth and all. But if somebody want to keep large cap TCS also, fine, but then it will be a big number in terms of IT. But I think Infosys should be a good bet, and that's what I thought about. And Infosys is in my radar when I want to start accumulating. From this online business stocks, CDSL, definitely yes. Naukri, I would say 100% yes. BSC, this is one of the stock which definitely yes. IEX, so IEX, IRCTC, CDSL, Naukri and BSC. So these are the five names. So from these five names, at least three should be okay. You know, you can consider because BSC and CDSL, you know, in the same business, but both are pretty strong companies. IRCT is an entirely different business. So you are you know diversifying in that way. And IEX, again, it's in a different set of business. So these four companies are into entirely different segments and different business range. So you are not you know overloading your portfolio with same business companies into portfolio, you know. So that way you are not killing your portfolio sense. In terms of food and restaurant, Jubilant Food, I think somebody Manish was mentioning. So Jubilant Food, yes, definitely I would give a preference to that from this one. And then next name for me will be VBL. So because VBL, you know that they are into very, very vast range of products like Pepsi, and then they have Lays and chips and a lot of, you know, other segments. So VBL and Jubilant Food,
can be these two names can be considered in your portfolio. So like this, I think if you can work out some names, like say maximum 20 names, not beyond that, 20 names should be fine, I think, for a core portfolio to consider. Divyani, I have not seen its fundamentals, Rajkumar. Seems Divyani can also be a good play, but we need to look at its fundamentals. In terms of cements, I really don't know, Krishna, actually. Cements, okay, all the names are pretty strong, like JK Lakshmi, ACC and all those. But right now, I think they are currently going through a big, input cost for the raw materials and all those things. But again, we are talking about a long term. We are not talking about to play a satellite. So I think, which is that JK Lakshmi or can you put say some names of ACC? ACC one, I feel definitely pretty strong, which has corrected a big way. Ultratech. Not Ultratech. Ultratech. See, ACC, if you see its previous history, complete strong uptrend, and since then it is just in the consolidation. But I feel damn sure Ambuja? that Ambuja, yes, definitely. I think recent there was a news, no? Who was buying a big stake in Adani, yes. So Adani bought ACC and Ambuja. Yes, Ambuja and this one. So I think then instead of playing both ACC and Ambuja, I think if you play with Ambuja, that should be fine, because both in both the companies, Adani is going to buy a stake. So Ambuja should be good to play with in cement. And then there was one more, JK cement. Mantesh bhai, what about Birla Corp? उसका देखा नहीं है मैंने फंडामेंटल्स, लेकिन बिरला कॉर्प भी है, काफी अच्छा है एक्चुअली. आप देखोगे ना, it has corrected a lot. हाँ, even if you see this JK Cement, this stock was where 3,800 से अभी almost 2,000, यानी almost 46% गिर चुका है. तो यूजुअली आप देखोगे तो ACC के सीमेंट के सारे स्टॉक्स, क्योंकि लास्ट 2-3 months, लाइक जब से ये वार शुरू हुआ है, विच इज लाइक जनवरी एंड फरवरी, जब से एक्चुअली एक कियोस्क शुरू हुआ, तब से उसके क्रूड ऑयल और गैस के प्राइसेस जब से जाने लगे, you will see that all this cement stocks started falling, because that energy cost is one of the major input raw material cost for them. तो जब ये प्राइसेस ऊपर जाने लगे तो ऑटोमेटिकली ये स्टॉक सारे नीचे गिरने लगे. तो बिरला कॉर्प, ACC, JK Cement, Ultratech, all those are very strong fundamental companies, but because of this uncertainty and energy prices, these all stocks are corrected very well. So ये जो 4-5 अच्छे fundamental नाम्स हैं, इनमें से एक 1 or 2 बिरला कॉर्प and Ambuja, or maybe JK Cement and Ambuja, like that you can play, 1 or 2 companies in your portfolio, or maybe one company is also okay from a cement sector. Because see, end of the day, agar there are hundreds of good fundamental companies, so if you want to buy, then the names will just go on increasing and increasing, and your portfolio will just then destroy the entire essence of the diversification. So we want to limit our portfolio to maximum, I would say, to 20 numbers, not more than that. तो अभी वो 20 स्टॉक्स के अंदर आपको हर सेक्टर को इंक्लूड करना है, बैंकिंग करना है, स्पेशलिटी केमिकल करना है, फार्मा करना है, ऑनलाइन बिजनेस को भी करना है, सारे सेक्टर्स को जब आप दो 3 स्टॉक्स आप करोगे, तो यू विल फाइंड डेफिनेटली इट विल क्रॉस 20.
So then you need to cut down, but just try to limit your stocks to 20, especially for your core portfolio. Then it will be much more easier for you to monitor and analyze and take a decisions whenever it is required, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी पूरी. Hi, Mantesh. Very good. Mantesh, Yeah. Actually, I wanted to ask a question about the risk management. Actually, so for example, currently my core portfolio is nearly 16 to 17% down. So, what step basically I can take? Should I reduce my stake? Should I basically remove the company which are not performing? What should I do at this time? Because this is very unclear stage that where we are moving. Okay, let's put it this way. Okay, who was asking this question? I didn't say the name. This is Anuj. Mantesh. Anuj. Actually, Anuj, ये भी एक पॉइंट मुझे बोलना था. अच्छा हो गया आपने एक क्वेश्चन रेज किया है. So right now I can see किधर गया है, कितने लोग हैं? 39 लोग हैं हमारे ग्रुप में. I will ask you one question, because at this moment what is happening, हर किसी को लग रहा है कि वो अकेला ही है जो प्रॉब्लम में है, इवन इंक्लूडिंग मी. तो लेट्स पुट इट कि हम मैं एक ऐसा क्वेश्चन पूछता हूं एंड आई वांट योर आंसर यस और नो ऑन दैट, कि एटलीस्ट हमें ये रियलाइज होगा कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूं, मतलब दिस इज द प्रॉब्लम एवरीवेयर और विथ एवरीवन. हाउ मेनी ऑफ यू गाइज, 39 आई कैन सी पार्टिसिपेंट राइट नाउ, whose portfolio is down more than 15%? Let's keep it as a minimum, just put yes or no in a chat box. More than 15%. Fantastic. See, so मेरा कहने का मतलब ये है, actually मेरा, if you ask me, my core portfolio is more than 15%. I think it is between 16 or 17% down. मेरा core portfolio. So पहले तो हमें ये अनुज, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अकेले नहीं हो इस पेन सिचुएशन में, so everyone's portfolio is down in that one. So at least that we will have that एक रिलीफ मिलेगा कि हाँ यार, मैं अकेला मतलब इतना लॉस में नहीं बैठा हूँ. तो मेरा भी ऑलमोस्ट 15 to 16% पोर्टफोलियो डाउन है. सो नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि इस वक्त क्या करना चाहिए. सी देखो, एक्चुअली मेरे हिसाब से जो डैमेज होना था वो डैमेज ऑलरेडी हो चुका है. अगर हम जब हमारा पोर्टफोलियो, ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ, नॉट एज एन इंडिविजुअल स्टॉक, 5 से 6% जब डाउन था हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो. सी यूजुअली व्हाट आई हैव सीन, देखिए इंसान को लर्निंग्स आती हैं जब वो गलतियां करता है और मेक अ मिस्टेक्स. सो जब धीरे धीरे जब मैंने ये रियलाइज किया कि मैं इतना मार्केट को फॉलो करता हूँ और इतना ओके, डेफिनेटली मेरे पास उस वक्त ये जूनियर केजी स्ट्रैटेजी नहीं थी, बट मैं काफी हद तक मैं जानता था कि क्या चल रहा है. बट समहाउ आई रियली डोंट नो व्हाई आई बिकम, मैं इतना डंप क्यों हो गया कि जब मुझे दिख रहा है कि मार्केट गिर रहा है और मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी है और जियो पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, एवरी डे स्टॉक इज फॉलिंग 5-6%, दिख रहा है मेरे आंखों के सामने, और मैं एग्जिट नहीं कर रहा. माइंडसेट, ओनली थिंग इज माइंडसेट. माइंडसेट क्या? मैं भी ये धीरे धीरे समझ रहा हूँ कि मतलब हम डिसीजन लेने में अटैच हो जाते हैं स्टॉक्स के साथ, बड़े बड़े नाम के साथ. हाँ, एग्जैक्टली. माइंडसेट क्या, मैं बताता हूँ कि ये तो मेरे पास बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ठीक है, ये तो मेरा कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गिर जाए 10% गिर जाए 20% गिर जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद अपने आप ऊपर आ जाएगा. लेकिन वो जब तक गिरता नहीं है हम रियलाइज नहीं करते. और टू बी मोर प्रिसाइज, जो मेरी ट्रेडिंग जर्नी है, मेरी ट्रेडिंग जर्नी शुरू हुई है 2020 कोविड के टाइम पे, तो उसके बाद इतना बड़ा फॉल मैं पहली बार देख रहा हूं. तो मेरा अगर पोर्टफोलियो 15-16% डाउन है, तो इस 2 या 3 साल में मैं पहली बार देख रहा हूं कि मेरा पोर्टफोलियो 15-16% डाउन है. नहीं तो अभी तक ऐसे कभी भी नहीं हुआ कि इट हैज क्रॉस्ड 5% ओवरऑल पोर्टफोलियो डाउन, नॉट ऑन इंडिविजुअल स्टॉक लेवल. द ओवरऑल पोर्टफोलियो कैपिटल मेरा जो है 5% के नीचे गया हो. हेलो. या हेलो. हाँ मंतेशी, शिवेंद्र भैया.
हाँ हाँ, जो अनुज जी ने वो पूछा ना रिस्क मैनेजमेंट पे, या ठीक है, थोड़ा सा मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ कि मैंने कल जैसे एक पोस्ट किया था, एक कुमार सौरभ का वीडियो पोस्ट किया था, तो क्या हम लोग इस तरीके का कोई स्ट्रेटजी डिवाइस नहीं कर सकते कि जिससे कि हमको पहले से ही पता चल जाए कि ये मार्केट अभी यहाँ से नीचे जाने वाली है। मैं काफी पुराना हूँ मार्केट में, मैंने ओके। देखा है जब 21,000 मार्केट थी हम्म और जब 18,000 आई तो लोगों ने कहा कि इससे ज्यादा अब ये नीचे नहीं जाएगी, हम्म और फुल्ली इन्वेस्टेड हो गए, 100% इन्वेस्टमेंट कर दी उन्होंने, जो उनके पास कैश जितना था वो सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है। बट वो 18,000 से 12,000 तक मार्केट गई उस हम्म टाइम, हम्म जस्ट हाफ हो गई। सो हम्म, यहाँ पर हम ये नहीं सोच सकते कि अभी यहाँ से रिबाउंड हो सकता है, यहाँ से हाफ हो जाए जी अगर सेम वो हुआ जो लास्ट टाइम हुआ था जी 2008 में। तो ओके मेरा कहना ये है कि जैसे मैं, बिकॉज आई एम नॉट आईटी से भी इतना मुझे नहीं मालूम है जो आप लोग बनाते हैं इस पे ट्रेडिंग व्यू पे, तो इस तरीके से हम लोग कुछ डिवाइस करें, क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि एक ही बात निकलती है कि कैश इज द किंग। बिल्कुल क्योंकि अगर आपके पास उस टाइम अच्छे स्टॉक्स हैं, और उस टाइम लोग क्या कर रहे थे मैं आपको बताता हूँ, ये 2007-8 में they were purchasing Reliance Communication, then Kingfisher, जो कि कंपनी, मतलब आप देखिए आज वो कंपनी खत्म ही हो गई है, ठीक है ना। या तो वो जो मोमेंट, और अगर आप उस टाइम के चार्ट रिलायंस कम्युनिकेशन के या किंगफिशर के देखें जिस टाइम वो खत्म हुई हैं, और उससे पहले के 1 साल के या 2 साल के चार्ट देखें, वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहे थे। तो जी पीपल वर ट्रैपिंग इन दैट कंपनीज। तो अभी जो हम ये डाउनफॉल हो रहा है मार्केट में, हमें मेन चीज वो कोर पोर्टफोलियो के स्टॉक्स आइडेंटिफाई करें, दे आर दोज कंपनीज व्हिच आर बेसिकली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, जो कोई भी बियर मार्केट को सस्टेन कर मतलब कर पाए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर कंपनी बचेगी तभी शेयर बचेगा उसका। बिल्कुल तो मंतेश मेरा जी, हाँ, तो मेरा जो यही सजेशन है कि हम कुछ, जैसे कल एक ये मैंने किया था, मैं इस तरीके का देखता हूँ एग्जिट स्ट्रेटजी, मतलब अल्टीमेटली कोई इस तरीके का हम डिवाइस करें सब मिल करके, बिकॉज वी आर 39-40 पीपल, लाइक माइंडेड पीपल, या सब इस तरीके का कुछ इस तरीके से डिवाइस करें, सो दैट जैसे अक्टूबर से 18 अक्टूबर ऑनवर्ड्स मार्केट कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड ट्रेंड में है। बिल्कुल बिल्कुल अब हम उस चीज को अगर ये चीज हम नवंबर में डिवाइस कर लेते हैं या दिसंबर में कि नहीं नहीं अभी यहाँ से मार्केट नीचे जा रही है, सो वी कम आउट फ्रॉम दिस मार्केट, हमको अपना कैश में आ जाए या डेट में आ जाए, सो दैट कि हमारा कैश जो है सेव रहे, और फ्यूचर में जब मार्केट लोअर लेवल पे हो तो हम एंटर करें। या डेफिनेटली काफी सारी चीजें हैं शिवेंद्र जी, कर सकते हैं हम। और जैसे मैंने कहा कि डेफिनेटली जब इंसान गलती करता है, गलती नहीं मतलब ठीक है, हमें जानकारी नहीं थी, जैसे मैंने कहा कि हम 2 साल से हम सब ट्रेडर बने हुए हैं मैक्सिमम लोग, तो हमने पहली बार ही इतना बड़ा फॉल देखा हुआ है, तो हमें खुद को ही पता नहीं था कि क्या हो रहा है और कैसे चल रहा है। तो अभी जब मैं ये ऑलमोस्ट 3 महीने से या 4 महीने से मार्केट फॉल हुआ है एंड नाउ ऑलमोस्ट बिग वे करेक्शन आ चुका है, तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आई हैव आइडेंटिफाइड, कि जो जिन चीजों को हम कंटिन्यूअसली अगर मॉनिटर करें तो एक इंडिकेशन आ जाता है हमारे को कि मार्केट अभी यहाँ से जो है अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है। जैसे जो अगर आप देखोगे एडवांस और डिक्लाइन का रेशियो है, या फिर जो स्टॉक्स का जो नंबर ऑफ अबाउट 200 और बिलो 200 है, सो ये जो हाँ, तो ये जो कुछ ये एक हाथ दो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा भी काफी सारे और चीजें हैं जिनको अगर आप रेगुलरली मॉनिटर करोगे तो बहुत वेल इन एडवांस आपको एक इंडिकेशन दिखना शुरू हो जाता है कि मार्केट अभी जो है धीरे धीरे वीक हो रहा है। और फिर उसको आप कनेक्ट करिए डॉट्स, जो मार्केट अगर वीक हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अनटिल अनलेस उसको कोई तो एक रीजन चाहिए, मार्केट को ऊपर जाने को भी रीजन चाहिए और नीचे जाने को भी रीजन चाहिए। तो रीजंस आप जब देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि
जैसे ये बार का सिचुएशन था, ये ऑलरेडी ये रशिया का वॉर का चल रहा था 3-4 महीने से, एंड देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स जो आप डॉट्स कनेक्ट करोगे तो समझ में आ जाएगा. तो आई थिंक वी कैन डू दैट वन. ऐसा देयर इज नो रॉकेट साइंस इन दैट वन. वो अगर हाँ, हम करें इस तरीके का या कुछ, तो मतलब हम जो एक लेमैन इन्वेस्टर के लिए वो बहुत अच्छा एक एफर्ट रहेगा, जिससे या कि हाँ से एक्चुअली देखिए वही हाँ, मेरा कहने का मतलब वही है कि इसके अंदर मतलब हम ऐसा हो नहीं सकता कि हम एक ज्योतिष की तरह एक सटीक हम ये विजुअलाइज कर पाएंगे, बट एक हमें आइडिया हो जाएगा कि अब जो है हमें कॉशियस होने की जरूरत है. जिस तरह से हम एक एग्रेसिव पोजीशंस ले रहे हैं वो ना लेके अब हम जो है अपना प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचे, क्योंकि कितने सारे मेरे ऐसे स्टॉक हैं जो जिनमें मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठा था, बिल्कुल बिल्कुल, और आप लेकिन निकल सकते थे. हाँ मैं निकल सकता था, लेकिन एक अलग माइंडसेट और एक साइकोलॉजी का अच्छा सा एक एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से वो प्रॉफिट तो गया ही गया, अभी सारे के सारे स्टॉक्स नेगेटिव में भी आ गए. तो आई थिंक अगर हम वो मार्केट स्ट्रक्चर चेंज, और वो स्ट्रक्चर चेंज एक दिन में या 2 दिन में नहीं होता है, इट टेक्स अ टाइम. वो वीक ऑन वीक अगर आप देखोगे तो आपको वो मार्केट स्ट्रक्चर चेंज का आपको आइडिया आना शुरू हो जाएगा. तो आई थिंक यस डेफिनेटली, जैसे आपने कहा कि हम एक 30-40 लोग लाइक माइंडेड पीपल हैं, जो हम एक रेगुलरली इस तरह के कॉल्स अगर हम करते रहें तो वी कैन ऑलवेज शेयर थॉट प्रोसेस कि हमें क्या लगता है, या क्या एवरीवन हैज देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द मार्केट. अलग अलग रिसोर्सेस हो सकते हैं, हर किसी को एक अलग जानकारी मिल रही होती है. तो आई थिंक क्युमुलेटिवली हम जब इसको एक प्लेटफॉर्म पे रखेंगे तो वी विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू टेक अ डिसीजन इन गोइंग फॉरवर्ड. शिवेंद्र जी, मुझे जहां तक लगता है बिल्कुल 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 इस तरीके का हम लोग करें, क्योंकि क्या है, देखिए मैं देख रहा था बहुत से पीएमएस और बहुत से म्यूचुअल फंड हाउसेस ने, दे आर सिटिंग ऑन कैश. या वो 30% 40% कैश पे बैठे हुए हैं इस टाइम, एंड दिस या मतलब नाउ दे विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग. यस डेफिनेटली, वो एकदम नीचे लेवल से अभी बाय करना शुरू करेंगे हाँ एंड हाँ, दे विल अर्न अ गुड प्रॉफिट. गुड प्रॉफिट. बट रिटेलर के साथ उल्टा होता है, रिटेलर के पास कैश ही नहीं बचता है, तो वो कहाँ से इन्वेस्ट करेगा. या तो ये प्रॉब्लम एंड एंड जस्ट टू आंसर, मेरी बात बीच में रह गई. आई थिंक हु वाज अनुज और somebody was asking asked me a Anuj. question. या सो अनुज, सॉरी, जस्ट टू आंसर यू एट दिस स्टेज आपको क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूं मैं बताता हूं, तो देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू कोरिलेट विद दिस वन. जैसे मैंने कहा कि मेरा भी पोर्टफोलियो ऑलरेडी 16-17% डाउन है राइट नाउ. तो पहले तो हमने जब डैमेज शुरू हो रहा था वी डिडंट एक्चुअली एक्ट एंड टेक अ नेसेसरी डिसीजन. सो ऑलरेडी डैमेज हमारा हो चुका है, और अभी ये डैमेज उस लेवल पे पहुंच चुका है कि इससे नीचे का जो डैमेज है वो बहुत लिमिटेड है. जैसे कहा कि निफ्टी अगर और ज्यादा गिरेगा भी तो कुछ 100 पॉइंट्स गिरने की उम्मीद है. तो वो अगर समझिए और एक 500 से वर्स्ट सिचुएशन, निफ्टी गोज अनदर 500 पॉइंट्स डाउन. So that 500 points down will impact your portfolio maybe another 1 or 2% maximum, or maybe 3%. So at this stage, I would say not to do anything, just hold on. And once the market rebounds back, and जब स्टॉक्स में एक पुल बैक आना शुरू हो जाएगा, और आप जब देखोगे कि कोई स्टॉक अगर एक रीजनेबल रेंज में आ गया है ऊपर, और समझिए अगर स्टॉक 10% डाउन है, एग्जांपल आई एम टेलिंग यू नाउ, एंड इट हैज पुल्ड बैक 5% and you are in a 5% minus, that time you can go ahead and take a decision to come out of that stock, and probably then you go to other good core portfolio and shift your capital over there. But at this stage, if you try to reduce your portfolio unnecessarily, that will be taking a loss. I feel that one, and that's what I am doing right now. Right now, even though the portfolio is down so much, I am not selling anything. I am just holding. Whichever I wanted to do, I did already long back. But whatever I have in my portfolio, everything is I am holding right now. Manteshi, Ramanuja, this side. Yes, sir.
अब मैं अभी ये कह रहा था, जैसे आप कह रहे हो कि अभी 100-200 पॉइंट और नीचे गिरने की उम्मीद है, तो अगर ये 1000 पॉइंट और नीचे चला गया तो क्या होगा? तो हम उस चीज को क्यों नहीं असेस कर रहे? नहीं देखिए, वही मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, पहले तो हम ये बात हमारे क्योंकि जब 18 पे थे तब भी यही सोचते थे इतना होगा, अब 16 पे आ गए, 15 पे आ गए, तो अब सही सोच रहे हैं। मैं तो कहूंगा हमें ये सोचना चाहिए 1000 गिर गया तो क्या होगा, हाँ गिर नहीं सकता है देखिए, या नहीं गिर सकता? देखिए होने को तो ये मार्केट है, तो 1000 क्या और 1500 भी गिर सकता है। नहीं, यू नो, अभी अभी वो बात तो ये है ना कि अगर 16% लॉस पे बैठे हैं तो या 32% पे जाने के लिए तैयार हैं तो ठीक है। हाँ देखिए, एंड ऑफ द डे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट टू ऐड माय प्रीवियस लाइन, कि आपकी क्षमता कितनी है। ओके, अगर आपको लगता है कि यार अगर ऐसी अनसर्टेनिटी आ गई और 10% मेरा पोर्टफोलियो नीचे जाएगा, तो फिर तो मैं मतलब बैंकरप्ट के स्टेज में आ जाऊंगा, या मेरी तकलीफें ज्यादा बढ़ जाएंगी, तो फिर तो सिनेरियो अलग है। लेकिन मेरे देखने का प्रोस्पेक्टिव ये था कि अगर समझे मेरा पोर्टफोलियो 10 लाख का है एग्जाम्पल, और उसमें से अगर मैं 20% डाउन हो, यानी 2 लाख मेरा ऑलरेडी लॉस हो रहा है, और एक 50-60 हजार का अगर लॉस हो रहा है मुझे, तो I should be okay with that one. So definitely it should be always a very individual decision. But जहां तक हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, जैसे मैं कह रहा था कि अगर और एक 400-500 पॉइंट नीचे जाने की बात हम कर रहे हैं, इट्स ऑल अगेन अ प्रोबेबिलिटी, कि मैं मार्केट में क्या आ रहा है। एक छोटा सा, मैं मेरे को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज का, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से। सपोज करो कि अभी कंफ्यूजन वाली स्टेट है, अभी जी कोई 16% डाउन पे, अगर वो कहता है जी मैं बाहर निकल जाता हूँ, जी लेकिन हमें अगले हफ्ते पता चलता है कि ये तो फिर वापस ऊपर जा रही है मार्केट, जी अगर वो दोबारा एंटर करता है, तो जी उसकी जो कॉस्ट आएगी 2-3% और एक्स्ट्रा आ जाएगी। कोई जितने जी पे छोड़ा, कुछ थोड़ा ब्रोकरेज लगेगी, चीज लगेगी, या 1-2% ऊपर हाई कर जाएगा और दोबारा वो एंटर कर जाता है। जी तो ये सिचुएशन ज्यादा कंफर्टेबल है या बजाय इसके कि 10% की वेट करें? मतलब कितना परसेंट में दोबारा आदमी एंटर कर जाएगा? एग्जैक्ट कहना तो मुश्किल है, क्योंकि देखिए अभी समझे मार्केट रीबाउंड होगा, तो हमें एग्जैक्ट उसी दिन तो नहीं पता चलेगा कि मार्केट, राइट। क्योंकि अभी जिस तरह से सिनेरियो आप देख रहे हो कि मार्केट एक दिन ऊपर जाता है, फिर उसके बाद 2 दिन या 3 दिन नीचे जाता है, फिर एक दिन ऊपर जाता है, फिर 2-3 दिन नीचे जाता है। तो तो अभी जब मार्केट रिवर्स भी होगा, तो हमारे दिल में इतना डर अभी बैठ चुका है कि हम एग्जैक्ट उसी दिन मतलब बाय करना तो नहीं शुरू करेंगे। हम बोलेंगे नहीं यार, हो सकता है कल या 2-3 दिन और आज जा रहा है ऊपर, फिर वापस नीचे गिरेगा, तो देन हम वेट करेंगे कि अच्छा खासा 2-3 दिन मार्केट रैली करने दो, उसके बाद में देखेंगे राइट राइट। बिकॉज यू डोंट नो नाउ। आज अगर समझे मार्केट मंडे को अच्छा सा खुला, क्योंकि अगर आप देखोगे फ्राइडे के दिन ग्लोबल मार्केट, अगर आप देखोगे फ्राइडे के दिन का, तो आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो? हाँ, देख पा रहे। यस, अगर आप फ्राइडे का अगर मार्केट देखो, ये डाउ जोन्स है, डाउ जोन्स सिर्फ 38 पॉइंट नीचे गिरा हुआ है, नैस्डैक 152 पॉइंट्स अप है। ओके, और अगर आप यूरोप का मार्केट आते हैं, देखिए ये शायद जर्मनी का है डैक्स, ये 88 पॉइंट, ये यूके का मार्केट है, ये एफटीएससी 35 पॉइंट। तो मार्केट काफी हद तक जो है स्टेबलाइज है फ्राइडे को। और अगर हम एशियन मार्केट में आते हैं, देखिए हांगकांग का मार्केट 229 पॉइंट्स अप था, लेकिन निकाई जापान का मार्केट 400 पॉइंट डाउन था। सो ओवरऑल अगर आप एक प्रोस्पेक्टिव रखे, और अगर मैं इंडेक्स फ्यूचर्स देखता हूं, देखिए यूएस का मार्केट कंप्लीट ग्रीन में है। ओके, और ये यूरोप का मार्केट, ये अगर सिर्फ यूके को छोड़ दूं तो मैं पूरा ग्रीन में है। निकाई एक रेड में है, मतलब एशियन मार्केट में निकाई एक रेड में है, बाकी मेजोरिटी देखिए हांगकांग मार्केट ग्रीन, चाइना का मार्केट ग्रीन। सो मार्केट काफी हद तक स्टेबलाइज दिख रहा है वो फ्राइडे के हिसाब से। बट हमें मंडे का पता नहीं है कि मंडे को क्या होगा। अगर इसी तरह से मार्केट स्टेबलाइज हो गया तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके बेसिस पे तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि यार नेक्स्ट वीक में जो है मार्केट थोड़ा सा
स्टेबलाइज हो जाएगा। तो उसको आप कनेक्ट करिए डॉट से, किस तरह से लास्ट 2 हफ्ते का सबसे बड़ा डर क्या था मार्केट के लिए, फेड के इंटरेस्ट रेट, कि फेड क्या करने वाला है, कितना % जो है अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। तो वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो गया, उसने 75 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया, तो वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो गया। अभी जो है उसका जब नेक्स्ट मीटिंग आएगा तो वो भी ऑलरेडी मार्केट को पता है अभी क्या होने वाला है। तो मोटा मोटा जो है अभी जहां तक जिस तरह का इकोनॉमी के हिसाब से अगर आप थोड़ा सा न्यूज पढ़ोगे या आर्टिकल्स पढ़ोगे कि आगे क्या होने वाला है, तो मोटा मोटा जो है 75 पॉइंट बेसिस पॉइंट जो है वापस फेड जो है वो रेट बढ़ाने का चांसेस है, जब भी उसका शायद जुलाई में मीटिंग है उसका। तो जुलाई में या अगस्त में जब भी उसका मीटिंग होगा और एक 75 पॉइंट बढ़ा देगा वो, तो वो मार्केट को ऑलरेडी पता है, तो मार्केट ऑलरेडी उस चीज को फैक्टर इन कर चुका है। लेकिन प्रॉब्लम कब होगी, अगर उसने 75 पॉइंट के बजाय अगर उसने 100 पॉइंट्स बढ़ा दिए, तो फिर वो मार्केट के लिए सरप्राइज होगा। लेकिन अगर जहां तक आज के डेट के हिसाब से जितने भी इकोनॉमिस्ट का अगर आप सुनोगे, तो वो लोग बोल रहे हैं कि भाई हो सकता है कि जो है फेड है वो और 75 पॉइंट बेसिस बढ़ा सकता है, तो वो ऑलरेडी मार्केट में फैक्टर इन हो चुका है। दूसरे सबसे बड़ी चिंता की बात क्या थी मार्केट के लिए, रशिया और यूक्रेन का वॉर। तो उसमें ऑलरेडी ये न्यूज है कि भाई जो यूरोप है वो चाहता है कि वार अब खत्म हो जाए। वो लोग ऑलरेडी जो है वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं वार खत्म करने के लिए, तो वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है। तो अगर आप इन चीजों को अगर पुटिंग ऑल टुगेदर देखोगे, तो उस बेसिस पे लग रहा है कि मार्केट मतलब बहुत ज्यादा नीचे गिरने के चांसेस कम है। हाँ, एक चांसेस हो सकते हैं कि वो मार्केट जो है वो टाइम बाउंड करेक्शन में चले जाए, मार्केट गिरेगा नहीं, लेकिन वो एक ही रेंज में जो है कुछ और महीनों तक उधर ही ऊपर नीचे करता रह जाएगा। वो रैली नहीं देगा, बिग रैली शुरू नहीं करेगा। बिग रैली शुरू करने से पहले कुछ हफ्ते या कुछ महीने जो है एक सर्टन रेंज के अंदर ऊपर नीचे करता रह जाएगा निफ्टी। दैट मे बी वन पॉसिबिलिटी। मैं इसमें कुछ ऐड करूं? प्लीज गो अहेड। तो एक्चुअली मैं पिछले 15-16 साल या 18-20 साल से हूँ इस मार्केट में, लेकिन जी। मैंने कभी ट्रेडिंग नहीं की, नेवर। ओके। और मैं लॉन्ग टर्म, मेरे पास कुछ शेयर्स हैं जो 15 साल 20 साल से भी पड़े हुए हैं। लेकिन मुझे ये लगता है ना कि अभी का बीच में 2-3 जो फॉल हुए उसमें भी मैंने कुछ लॉस बुक किया। मुझे ये लगता है कि ना अब मेरी स्ट्रेटजी ये हो रही है कि मैं अभी स्टार्ट कर दिया है ऐड करना कोर पोर्टफोलियो में। मैं वीकली से कम देखता नहीं हूँ, कोई भी EMA हो कुछ भी हो, मैं वीकली से कम पे नहीं जाता हूँ क्योंकि मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है। तो जैसे मैंने अभी ऐड करना शुरू किया, तो मैं ये कर रहा हूँ कि नए वाले जो एडिशन है एग्जिस्टिंग शेयर्स में ही ऐड कर रहा हूँ। नए वाले जो शेयर्स हैं मैं उसमें अब मुझे पिछले 1-2 साल में थोड़े ट्रेडिंग के स्टॉप लॉस ये सब चीजें पता चली हैं, पहले तो मुझे पता ही नहीं था। ओके। तो वो मैं 5% का स्टॉप लॉस लगा के चल रहा हूँ कि गिर जाएगा तो ठीक है मैं निकल जाऊंगा, लेकिन पुराना रखा हुआ हूँ। ओके। अब मैं इस तरह सेट कर रहा हूँ कि अगर और गिर जाएगी मार्केट तो ठीक है, नोबडी नोज कि कब गिरेगी कब बढ़ेगी। तो 5% के स्टॉप लॉस लगा के मैं चल रहा हूँ, गिर गई तो बंद हटा दूंगा। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ कि जब थोड़ा सा बॉटम के करीब होती है, तब मैं सपोर्ट के करीब होती है फिर से ऐड करता हूँ। गुड आइडिया। That's what I actually understood since last 2 years. I think that's good. जैसे मैंने कहा कि अभी और एक्चुअली इसकी वजह से ये हो रहा है कि मैंने कुछ शेयर्स जैसे लिए थे जो कि जीरो हो गए। रिलायंस पावर देख लीजिए, मैंने पुंज लॉयड और ये सब, वो सब में मैं स्टॉप लॉस वगैरह जानता नहीं था, तो चलो ठीक है स्टॉक में पड़े हुए हैं पोर्टफोलियो में जी, और टाइम नहीं मिल पाया, देख नहीं पाए, तो बाद में पता चला यार ये तो जीरो हो गए। तो अब मैं वो नहीं कर रहा हूँ, तो नहीं उससे बिल्कुल थोड़ा सा सही बात। कंट्रोल्ड है। I think this is a very good and good idea. जैसे somebody was asking कि क्या हम इस स्टेज पे बाय करना शुरू करें। सो यस, अगर आपको लगता है कि हम बॉटम आउट नहीं हुए हैं बट लेकिन नियर बाय पहुंच चुके हैं, तो अगर आपको एक छोटा सा क्वांटिटी से शुरू करना है, एक्यूमुलेट करना है, तो 5% 6% का स्टॉप लॉस रख के आप बाय करना शुरू करिए। अगर उसके नीचे जाएगा तो एग्जिट मारिए, और उसके नीचे बहुत ज्यादा जब चला जाएगा वापस फिर बाय करिए। आई थिंक दैट शुड बी गुड आइडिया एक्चुअली।
या एक्चुअली बिकॉज़ नोबडी नोज एक्चुअली वेयर इज द बॉटम एक्चुअली, फिर बाद में फिर हाथ ही मलते रहते हैं, यार यार 20% बढ़ गया। एक्चुअली बेसिस ऑन दैट ओनली, जैसे मैंने लास्ट वीक में बात किया था एक स्टॉक के बारे में, कैम्स के बारे में, वो कैम्स मैंने उसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से खरीदा था कि वो स्ट्रक्चर के हिसाब से मेरे को परफेक्ट लग रहा था कि वो पूरा नीचे गिर के फिर वापस अभी ऊपर आके 200 के ऊपर आ गया है वो, तो मैंने उसको उधर फर्स्ट ट्रांच ऑलरेडी ऐड कर दिया है। तो मेरा थॉट प्रोसेस एग्जैक्ट आपके ही तरह था कि अगर वो उसके नीचे गिरेगा तो मैं आउट हो जाऊंगा, लेकिन फ्राइडे को उसने अच्छा रैली वापस दे दिया। राइट। तो yes, that can be done. Even I feel that's something we can start, because we never know कि कब वो पूरा बॉटम डाउन होके जीरो हो जाएगा और हमें लगेगा कि नहीं यार अब खरीदना शुरू है। नहीं, you can't do that one. एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, ये स्ट्रेटजी मैंने एक्चुअली 2 साल में जो ट्रेडिंग सीखी है, ये ह्यूजली प्रॉफिटेबल शेयर जो मेरे हैं, जैसे एप्कोटेक्स है, पीआईटी है। एप्कोटेक्स मैंने 15-16 रुपए में ले रखा है, ह्यूज क्वांटिटी, अराउंड 15 साल पहले। ओके, जब भी है 2007-8 में। ओके। और Okay. केपीआईटी 30-40 रुपए में लिया हुआ है। तो मैंने अभी, उस समय मेरे पास उतनी अमाउंट नहीं था, तो मैंने 500 शेयर, 1000 शेयर ऐसे ले रखे हैं। जी। अभी मैंने लिए हैं तो अच्छी क्वांटिटी ली है केपीआईटी की, लेकिन आप विश्वास नहीं मानोगे, 7-8 टाइम्स पे लिए हुए। 40 रुपए की जगह मैंने 300 रुपए पे लिए हैं, जो मैं पहले सोच भी नहीं सकता था। ओके। और केवल इसी स्टैंडर्ड से लिया हुआ कि गिरेगा, मेरे उससे 5% या 10% का जो स्टॉप लॉस है, अगर उससे नीचे गया तो मैं बेच देता हूँ। और मैंने काफी निकाल भी दिए केपीआईटी, वो प्रॉफिट में निकाले सारे। तो उस तरह से मैंने थोड़े किए वीकली पे। नहीं अभी नोबडी नोज एक्चुअली कि आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि भाई बॉटम पे खरीदो टॉप पे बेचो, इम्पॉसिबल है। नहीं, लेकिन एक्चुअली एक चीज अगर आप देखोगे कि जैसे मैंने कहा कि मुझे भी पहले नहीं पता था कि भाई हर बार एक बायस डिसीजन आ जाता था कि यार मैं बेचूं तो क्या होगा, अगर मैं बेच दूं तो उसके बाद ऊपर चला जाएगा। लेकिन वो ये जो फॉल आया इसके अंदर काफी मैंने मतलब डिड लॉट ऑफ स्टडी ऑन दैट। और द मेन रीजन कि आपको आंखों के सामने दिख भी रहा है कि आपका स्टॉक गिर रहा है, बट लेकिन एक माइंडसेट और एक साइकोलॉजिकल बायस आपका होता है आपका स्टॉक के प्रति, तो आप एग्जिट नहीं करते हो। तो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द मेजर एनिमी जो हम रिटेलर्स का है, जिसको हमें निकालना है। एंड दैट्स रिगरसली आई एम फॉलोइंग दैट वन। एंड नाउ जैसे आपने कहा कि आप मतलब बहुत रेगुलरली मतलब ये नहीं करते, मेजरली आप पोजिशनल और लॉन्ग टर्म करते हो, तो ये जो जूनियर गेजेस इंडिकेटर है ना, इसको आप जस्ट आप इसको ही फॉलो करिए। और आप वीकली पे फॉलो वीकली पे करिए, मंथली पे करिए, अगर आपको सब पे वर्क करता है। अरे एकदम परफेक्ट करेगा। एकदम आप इसको सिर्फ मंथली पे चेंज करके आप थोड़ा सा कुछ स्टॉक्स को आप बैक टेस्ट करिए, आपको एकदम दिखाई देगा। अगर समझिए कोई एक स्टॉक का नाम ले लीजिए जो आपने बहुत पुराना खरीदा हुआ है। एप्कोटेक्स है, जैसे मैंने खरीदा हुआ है 2007-8 में, आपको 15-20 रुपए में खरीदा हुआ था, जहाँ तक मुझे याद। आप मेरा स्क्रीन देख रहे हो? हाँ, इसको मैं मंथली कर देता हूँ। तो अगर देखिए ये यहाँ पे समझे 30 रुपया, अगर व्हेन यू परचेस, ये 15-20 साल पहले का है, मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअली। हाँ, तो देखिए इसके अंदर अगर मैं रिसेंट की भी रैली लेता हूँ, समझिए यहाँ पे 2020 से भी अगर मैं लेता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप एंटर करते हैं यहाँ पे, मैं अभी 250 रुपए पे करीब फिर लिया था मैंने। हाँ, तो समझिए अगर जूनियर केजी इंडिकेटर के हिसाब से अगर हम जाते हैं और इसको अगर लॉन्ग टर्म है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ इसको, 4। हाँ, और यहाँ पे भी मैं इसको 4 कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ अराउंड यहाँ पे अराउंड 173 रुपीज पे, दिसंबर 2020, यानी मतलब 2020 खत्म हो गया, 2021 और 2022, यानी 1.5 साल में यहाँ से मैंने इधर लिया था मंतेश जी, इधर 250 के करीब, 200-250 पे, उसको बड़ी वाली जो कैंडल दिखाई दे रही है। हाँ, नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ जूनियर के जी स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे या ये इंडिकेटर फॉलो करेंगे, तो क्या होता सिनेरियो
आपके बाय करने के बाद में देखिए अभी तक सेल नहीं हुआ है और स्टॉक इज एट 250%। अच्छा गोइंग गुड यार। अगर समझे केपीआईटी, ये तो गया लॉस में गया बीच में। हाँ देखिए अगर स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे बाय करता मैं, या यहाँ पे सॉरी 122 रुपए पे, ठीक है, और अभी यहाँ पे है ऑलमोस्ट 280% पे, अभी भी सेल नहीं दिया है उसने। अच्छा अभी भी चल वीकली पे देखा होगा, फिर एक बार वीकली देखेंगे। वीकली पे सेल दे दिया इसने। हाँ वही मैं कर बीच में ये दिया था 550 600। तो मेरे हिसाब से है ना वीकली अगर आप करते हो तो आई थिंक दैट शुड बी गुड इनफ रादर देन मंथली ना। हाँ वीकली देख रहा हूँ मैं एक्चुअली। हाँ क्योंकि मंथली में क्या हो जाता है, वो बहुत लंबा ड्यूरेशन हो जाता है, फिर वो कभी कभी हो सकता है कोई स्टॉक में आपको सेल ट्रिगर हो, तब तक आपका काफी अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो ऑलरेडी वाइप आउट हो चुका हो। करेक्ट। लेकिन अगर आप वीकली पे अगर आप देखते हो ना, इसको मैंने वीकली पे टेस्ट किया हुआ है, मैं तो कहूंगा कि वीकली पे ये इतना ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है डेली से ज्यादा। ओके और उसमें भी सब में 0.04 ही यूज करना है। हाँ 0.04 करिए। अगर समझिए मैं केपीआईटी यहाँ पे ये कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये दिसंबर 2020 अगेन 111 रुपए पे मैं बाय कर रहा हूँ और मेरा फर्स्ट यहाँ पे सेल यहाँ पे आया, समझिए आंख बंद करके अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पे मैंने बाय किया है और यहाँ पे यानी 182% पे मैं बेच रहा हूँ इसको। ओके फिर मेरा बाय यहाँ पे आ गया ये कैंडल पे। तो ये कैंडल से कहां तक, यहाँ तक यहाँ पे कहीं सेल ट्रिगर हो गया, तो ज्यादा नहीं 26%। तो 182% प्लस 26% यानी 200%। सो इसके अंदर आपको ज्यादा मतलब फिर हर दिन आपको देखने की जरूरत नहीं है। फ्राइडे के दिन या थर्सडे के दिन एक बार आपको सिर्फ चार्ट खोलना है और देखना है कि इंडिकेटर ने क्या किया है। ओके सिंपल। इंडिकेटर ने अगर अभी भी ऊपर है जीरो के तो कोई टेंशन नहीं है, वापस उसको कंटिन्यू करिए, नेक्स्ट एंटायर वीक के लिए आप कंटिन्यू करिए। नेक्स्ट फ्राइडे वापस आइए, वापस देखिए कि अगर इंडिकेटर नीचे चला गया है तो एग्जिट मारिए, खत्म करिए उसको प्रॉफिट बुक करके। बिल्कुल ठीक। और मैं एक और भी चीज कहना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए हर चीज कुछ मल्टी बैगर टाइप के जैसे जो मैं शुरू से काफी हूँ और मुझे लकीली मिले भी हैं, कुछ लॉस भी हुआ है 100%। जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन में फिर जल्दी निकल गया था। तो इस तरह के जैसे मेरा न्यू एज टेक्नोलॉजीज में बहुत इंटरेस्ट है, बीइंग इनटू आईटी सिंस लास्ट 20-25 इयर्स। तो मैंने न्यू एज टेक्नोलॉजीज और ग्रीन टेक्नोलॉजीज में लगा रखा है। तो उसमें तो मैंने डेलिबरेटली लगा रखा है, रिस्क पोर्टफोलियो है। ओके 50% भी डाउन होगा आई डोंट केयर, मैं 10 साल तक उसको देखूंगा, जीरो हो गया तो जीरो हो गया। इस हिसाब से मैंने लिया हुआ कि कुछ लमसम अमाउंट रखा हुआ, क्योंकि ठीक है अगर आपके पास टाइम है देन यू कैन ट्रैक, इफ यू डोंट हैव टाइम पुट इट एक्चुअली फॉर मल्टीपल इयर्स एक्चुअली। नहीं और उस तरह से जब आप प्ले करते हैं तो डेफिनेटली एक आध स्टॉक या दो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है कि आपको वो जीरो हो जाए, जैसे कि आपने कहा मैंने 5% लगा रखा है अपना पोर्टफोलियो का, 5% मैं बात कर रहा हूँ अगर पुराने, मैं बात कर रहा हूँ अगर पुराने आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी, जैसे आपके एक दो स्टॉक जीरो हो गए, जैसे आपने बोला रिलायंस पावर जीरो हो गया या कुछ और एक आध स्टॉक, तो वो यूजुअली हर पोर्टफोलियो में ऐसे होने ही वाला है, एक या दो स्टॉक वो आपको लॉस करेंगे ही करेंगे। बट लेकिन ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो देखोगे आप तो काफी सारे स्टॉक होंगे जो वो रिस्क को ऑलरेडी मतलब वो कवर कर चुके होंगे। हाँ वो तो है ही। जैसे इसी तरह से मेरा गरवारे मैंने शायद एक बार किया भी था, वो मोर देन 100x हो गया। हाँ उस समय किसी को पता ही नहीं था कि क्या है ये। या नहीं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको एवरेजिंग अप भी करते जाते हो ना, तो वो रिटर्न्स में काफी अच्छा आपको हेल्प करते जाता है फिर बाद में। मंतेश जी एक्चुअली वो वही मैं बता रहा हूँ, ये सब चीजें मुझे 2 साल में ही पता चली, पिछले 1.5-2 साल में, कि एवरेजिंग अप, स्टॉप लॉस। तो अब मैंने शुरू किया, जैसे केपीआईटी के एग्जांपल दिया, या
इसका रेपो टैक्स का। नहीं तो पहले मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि 10 रुपए के शेयर में 30 रुपए में कैसे खरीद लूं। और एक माइंडसेट भी बन जाता है। राइट राइट। वो एक लर्निंग है मेरी, नो डाउट, आप लोगों से जुड़ने से। नहीं अभी आई थिंक मैं एक चीज देख रहा हूँ कि देखिए अभी हमने सिर्फ 2 ही मीट्स किए, लास्ट संडे हमने किया और ये संडे किया है। देयर आर सो मच थिंग्स ओपनिंग, यू नो, जैसे आप जैसे हो मार्केट में, इतने मतलब सालों से हो, पुराने हो, और आपने वो दौर देखा हुआ है कि कैसे हाउ द मार्केट हैज चेंज्ड, यू नो, शेप। तो दिस विल डेफिनेटली हेल्प everyone, you know, to understand how to react and all those things, and जब cumulatively हम अपने व्यूज शेयर करेंगे सब लोग, तो आई थिंक नेक्स्ट टाइम जब भी अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो वी विल बी इन अ वेरी बेटर पोजीशन, जहां तक मुझे लगता है कि हम अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। आई होप सो। या And मतेश जी, एक definitely- और रिक्वेस्ट थी आपसे, आपकी बोलिए। जो ये वॉच लिस्ट है बहुत अच्छी लगी मेरे को। अच्छा, अगर ये टेक्स्ट वाले? फॉर्म में हाँ अगर दे दे तो थोड़ा सा मेरे लिए भी आसान हो जाएगा, हाँ, और मैं भी ग्रुप- लोगों को बेनिफिशियल रहेगा मैं ये। ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ, हाँ। टेंशन मत लीजिए उसकी, वो ग्रुप में मैं पोस्ट कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल, थैंक्स। और जो यहाँ पे भी है ना, जो अभी जो मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, तो अभी जैसे जैसे अगर समझो मार्केट नीचे जा रहा है या बॉटम आउट हो रहा है, तो आई थिंक हम रेगुलरली जब हम बात करेंगे तो हमें हर किसी का जब हम प्रोस्पेक्टिव जानेंगे तो आई थिंक एक कम्युनिटी हमें आइडिया आ जाएगा कि वो मार्केट में अब यार मतलब यू नो बॉटम आउट हो रहा है। तो आई थिंक दैट वे आल्सो इट विल बी गुड। अच्छा, मैं एक स्टॉक के बारे में पूछना, अगर एनीबॉडी अलाउज, एवरीबॉडी अलाउज। बोलिए बोलिए बोलिए। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से। हाँ हाँ। ये मैप माई इंडिया के बारे में किसी को आइडिया है क्या? नहीं, मैंने कभी खरीदा भी नहीं है, उसको मैंने कभी ट्रैक भी नहीं किया है मैंने, लेकिन मैप माई एक्चुअली फॉर वेरी लॉन्ग टर्म में पिछले मतलब नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए रखना चाहता हूँ इस तरह से। देखिए एक्चुअली वो तो अभी वो जो उसका जो आईपीओ का प्राइस था उसके नीचे ट्रेड कर रहा है अभी वो। हाँ, टेक्निकल तो नहीं होगा, ये नया ही है। या आई थिंक उसको देख फंडामेंटल्स सकते के बारे में मुझे पूछना था, अगर किसी को पता हो, जुड़ा हो इस इंडस्ट्री से। यस गाइस, देख लीजिए, अगर आप में से कोई अगर और भी ट्रैक करता है मैप माई इंडिया को, तो यू कैन शेयर योर थॉट्स इन अ ग्रुप। वी विल सी कि अगर किसी के पास और कुछ किसी ने रिसर्च किया हुआ है तो देन दैट शुड हेल्प एवरीवन। Yeah, that's it guys, and one more thing just wanted to tell you is next week I will be not there. I will be on a business trip, so I will be traveling entire week. I will be back on Thursday only. तो but I would request कि आप ग्रुप में एक्टिव रहिए, पोस्ट करिए आपके पोस्ट, और I will have only chance to look at the group only in the evening once I am back in the hotel. पूरे दिन तो मैं ऐसे जगह पे रहूंगा जहाँ पे मेरे पास मोबाइल भी नहीं होगा। तो बट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ग्रुप में आपके जो भी थॉट्स हैं वो उसको आप शेयर करते रहिए। सो इवनिंग इफ आई सी देन आई विल रिप्लाई टू यू, एंड देन वंस आई एम बैक ऑन थर्सडे देन आई विल बी अगेन एक्टिव इन द ग्रुप। श्योर। Okay sir, I think we have almost done. Thank you very much, and if anything is there, please do post in the group. Thank you everyone. Thank you.